इस फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट कॉल होने वाली है, जहां पे बहुत सारे अपडेट्स हमारे को मिलने वाले हैं। तो अब से कुछ ही देर के अंदर हम लोग लाइव होंगे। तो इन द मीन टाइम मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि जूम मीटिंग ओपन हो चुकी है, आप इसका रिक्वेस्ट अपनी टीम तक पहुंचा दीजिए, ताकि वो भी वक्त रहते इस मीटिंग का पार्ट बन सके, बिकॉज बहुत जल्दी 1000 पार्टिसिपेंट्स पूरे हो जाएंगे। उसके बाद उनको जूम में एंटर करने का मौका नहीं मिलेगा। वो उसके बाद यूट्यूब और हमारे बाकी सोशल मीडिया चैनल्स के ऊपर हमारे साथ कनेक्ट होकर इस मीटिंग को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे, पर जूम के अंदर उनके कनेक्ट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो अभी मैं आपके साथ एक छोटी सी वीडियो यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ। उसके बाद हम यहाँ पर अपने आज के खास स्पीकर हमारे सीईओ मिस्टर डेनिस सेहू को यहाँ पे हम इनवाइट करेंगे, जो हमारे साथ मैनेजमेंट की बहुत सारी अपडेट्स रखने वाले हैं। इस फाइनेंशियल ईयर की बहुत सारी नई बातें बताने वाले हैं, जो कि हमारे इस फाइनेंशियल ईयर को अभी तक के बेस्ट फाइनेंशियल ईयर में कब तब्दील कर देंगी। मैं बहुत जल्द आपसे दोबारा से रूबरू होऊंगा। तब तक एक वीडियो को हम यहाँ पे एंजॉय करते हैं, को और बहुत बड़ा लीप लेने में हेल्प करेगी। सो नाउ इज द टाइम आई शुड इनवाइट our guest speaker today, our best speaker today, our visionary leader, the one and only our CEO, Mr. Denis Sehu, on the stage, so that he can share the updates with us and we can actually take notes, so that we can pass on this message to our team members, our community, our prospects, our new joinings, so that they understand what is in store for them in the future. So now is the time. I should not make you wait. And it's the time I should invite our CEO, Mr. Denis Sehu. So over to you, sir. You can take forward from here. And you should, all the community should actually applaud with different emojis. You can raise your hand, you can share heart emojis, you can share thumbs up, whatever you want to do. So just stay connected, and very soon our CEO will be there. And those who do not get the chance, इनको चांस नहीं मिलेगा जूम का पार्टिसिपेट बनने के लिए, क्योंकि 1000 की कम्युनिटी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। तो आपके साथ लाइव स्ट्रीमिंग का लिंक भी शेयर किया जाएगा, वो आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और जितने ज्यादा लोग इसको सुनेंगे आपकी टीम के अंदर, उतनी बड़ी ग्रोथ आप यहाँ पे एंजॉय कर पाएंगे। तो आई होप आवर सीईओ इज ऑलरेडी हियर। So our CEO will be here at any moment and this point of time। तो भी हमारे पास 2-3 मिनट का टाइम और है कि हम अपनी कम्युनिटी तक ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि मीटिंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, मीटिंग लाइव है, ताकि वो भी इस मीटिंग का पार्ट बन के आज की इंफॉर्मेशन को डायरेक्टली सीईओ के मुंह से समझ सके। और उसके बाद जो अपडेट्स यहाँ पर आएंगे, आप उनको नोट्स जरूर बनाइएगा। मैं अपने नोटबुक को लेके रेडी हूँ, सो दैट आपके पास एक एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट हो, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन हो, जो आपको आगे जाके फील्ड में इंप्लीमेंट करनी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे अपडेट्स का वेट कर रहे थे, और आज उन सभी अपडेट्स को देने का वक्त आ गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं आज की इस मीटिंग के लिए, बिकॉज हमारे को एक ब्रीफ आइडिया हमारे को सीओसी कॉल के अंदर मिला था। तो बहुत सारे जो आज अपडेट्स होने वाले हैं वो बहुत अमेजिंग होने वाले हैं, जो हमारी कम्युनिटी को नेक्स्ट लेवल पे पहुंचने में हेल्प करेंगे। So very soon our speaker will be here. I think that he's facing some technical issue. Just give me a moment. Let me just check with the backend. Updates. Can everybody hear and see me clearly? Yes, loud and clear, sir. Mr. Anurag, please confirm. Perfect, Loud perfect. Thank you so much. Thank you so much, ladies and gentlemen. Thank you very much. We didn't have technical issues. We just had to rush to come in queue to join this lovely Zoom call. But thank you for the love and appreciation. I can see all the emojis and hearts there, the hands raised. Thank you so much. Thank you also for the lovely introduction. I was listening to you, Mr. Anurag. Thank you so much every time for this lovely, lovely introduction. So, ladies and gentlemen, welcome to this live session on Zoom, on YouTube Live, from wherever you're streaming this, from wherever seeing this. I'm here to give you a quick recap of the first quarter of 2026, what happened, what we did, what the company did behind the scenes, and a quick
preview, sneak peek, I would say, about what is to come for you. So 2026 started amazing for everybody, and we opened our office for some major individuals. People came and saw the new office that we opened in Dubai. I think if you talk to that impression, maybe you saw already some photos and videos. It was an amazing session every time when we had guests. The office response was amazing. It took a whole year to build. The space is very huge for the people who can't imagine. It's not just a normal office that you have in your head. It's a huge space, 2 floors with different offices inside for each department. So amazing, and the response was amazing from the community. Unfortunately, around the world, there are some tensions happening, which I really feel sorry about for the people suffering. But let me tell you one thing. I said it also in another Zoom call with some teams, that these kind of scenarios around the world, if you imagine back then when we talked about the past, about the history, it was a good time to buy gold, it was good time to buy crypto, it was whatever it was, even way before I was alive. Yeah, people said it was such a good time to buy stocks we didn't buy. These are the scenarios around the world where you get the opportunities, where we say an opportunity in a century. Why? I know war or war-like situations are not something good for human beings, and nobody wants to promote war. But if we talk in an industry like where we are operating around the world, we are the lucky ones in 2 ways. Number one, to be independent around the world. What we preached, what we talked about earlier, all these years, that Web3 is giving you independence. Web3 is giving you the opportunity to work from all around the world. Web3 is giving you the chance to survive crisis like COVID in 2020 because you are independent. Again, we have it in front of our eyes. There are tensions around the world. Maybe you heard there are some economic tensions as well, with fuel prices spiking up, flights getting expensive. But it all doesn't matter. It doesn't matter where you are, because with just a device and the internet, you are completely independent around the world. So on this point, we are all very lucky to be in this position. And second, to come back, what I started to talk about is you are getting opportunities like never before. Why? Because the world is changing in front of our eyes. The things are moving digital. The, let's say, conspiracy theory all the years of money, real cash getting away is in front of our eyes. The European Union introduced the first step into the digital euro in 2029. And yes, maybe in 2019, when we spoke about it, it was 10 years ahead, but this is just around the corner. So we can really see that everything around this global is about to become digital. And to be honest, I have to smile, I have to be happy, I have to be excited, because what we were talking about for years, it is happening in front of our eyes. So again, I said we are the lucky ones to be in this kind of situation with whatever we have in our hand. We are independent as independent business owners in the Web3 space, in the Forex industry, in whatever digital industry you want to be in. You are an independent businessman or woman. And second, the world is changing, the world is shifting, and this is an opportunity like never before. Because when the world and the global economics are shifting, there's always the opportunity in being the first mover. It could be a new digital currency is coming out. It could be a new system is coming out. It could be that new sectors, like we saw the AI revolution, I would name it. I still think we are not even in a revolution of AI. I think we are in the first
beginning steps of and revolution. Still, people are doing jobs manually. Still, people are going to work in normal jobs. But very soon, we can see that all these tests that are being around the world, where robots are doing labor jobs, where robots are doing different tasks that humans used to do, I think they will take over very soon. And we are again very lucky and blessed to be in a position where we are. So, to be honest, 2026 started with full motion, full power in every sector around the world. It's moving very fast. We already closed a quarter successfully in a positive manner. And yes, unfortunately, there are some tensions in the Middle East, but this does not stop anything that we try to do, because we can work from wherever we are around the world, and same you can do. Now, one thing which is very important and which I want to talk about quickly to give you a quick input before the next people will come and share some great insights with you. You have heard it, maybe you've been the lucky ones to see live on an event when we announced it. Maybe you have been in the past webinars, but we are about to launch something major very soon. I just shared my screen. I hope everybody can see and read my screen right now. Just give me a quick feedback. That should be okay. Mr. Anurag, can you see my screen? Just to confirm one last time. Now you can't see it yet? Now it's visible. Yes. Great. So, ladies and gentlemen, ADUP is around the corner. ADUP, the application that will join our ecosystem, that will change people's life. Because why it will change people's life? That's not a small slogan, but it will change people's life because everybody nowadays is used to get up in the morning, check their mobile phone, be on the phone. Even it is not a good thing, but be on the phone while driving, be on the phone while being in the metro, be on the phone even on the plane. When I took my last flight in Europe, I was able to have Wi-Fi, and I couldn't do much because the Wi-Fi was not too strong. I could do simple things on my phone, but this can change people's life. Why? Because with simple tasks, you will be able to gain rewards. But let me get quickly into the topic itself. You can read here and see advertising is broken. Everyone is talking, no one is listening. And let's be very honest, this is very true. Even myself, I will take myself as an example. When I scroll through social media, through any website, I see advertisement, I see influencers promoting something. And if a hook is something where they catch you, like when you go fishing, a hook, when the hook in an ad is very interesting, then maybe you will get attention for a couple of seconds, but that's it. After that, you got the attention for a couple of seconds and the people are scrolling again. So they are talking out there, but nobody is really listening. So when companies pay for advertisement, what is happening out there nowadays, they will get impressions instead of interaction. Why? Because also the advertisement market, also the social media is flooded with advertisement. I remember we used to use Facebook, Instagram, Snapchat just to connect to each other, share pictures and see what the other person is doing. But nowadays, it's not even possible to open the application without the first post or the first, let's say, ad being straight opened into your eyes and trying to sell you, to convince you something. And when something is for free, let's name it very open, the product is in front of your mirror. The product is you. That's why social media channels are free. That's why everything is free outside, because it is about advertising, getting data, collecting data, and selling to people. But the biggest issue for us as a consumer is that there is little to no value for us, because we just watch the ads. Maybe if I like the product, I can buy it, but that's it. With ADUP, this will be
changed. Why? Because the solution is reward-based engagement. Now, when you will open the application, instead of scrolling your social media feed, you can open ADUP and you will get tasks to do. So the company which will advertise their, let's say, product, website, whatever it is, they will give you a task to do. It could be a follow on their social media, it could be an account opening, it could be a small game. Whatever it is for free for you as a user. So you will be able to open the application and do the task for free. And what am I getting as a reward? You will get M coin. Now, what does it mean in the back end? It means that we are boosting M coin in the outside community. It means when people will join ADUP, do the daily task, they will get rewards based on M coin. Not only in our community, but in outside communities will gain attention because they will want to do something with the M coins. What they can do, what they can use it for, another speaker in this call will introduce to you and give you some quick insights, but people will get the reward based on M coin, which is a great thing for the community which is existing already. They will be able to use it across the whole ecosystem. For new outside community, it will be attraction into the ecosystem. And this is something major. That's why I said life-changing, because instead of useless scrolling on your phone, you will be able to gain rewards being on your phone for free. Maybe it's just 5 minutes when you're in the metro going home. Maybe you're waiting at the airport lounge for your next flight. You can go through the task. Or like we all do, let's be honest, you're just laying down in bed, trying to sleep, and you want to quickly grab your phone for the last 30 minutes before you sleep and do something productive. So something major is about to come. Everything in detail, everything in detail will be explained very soon to you. Within the next 15 days, you can expect another announcement for a proper webinar, which will take way longer. And you will be able to see all the steps, how to access, how to download, what to do, what's inside, and all the other benefits of ADUP. So from my side, ladies and gentlemen, that was it. I really want to pass on my speech time to a very important person nowadays in my life, to somebody who I even look up to when it is about the financial markets, when it is about being so focused and being so in hands with the team. I'm talking about Mr. Cliff Ciccona himself. He is here somewhere in the waiting line to join us. He will show you and guide you what is going on in the financial markets, what is the company doing in the financial markets, and most important, what's going on with our education platform. So I would give it back to you, Mr. Anurag, to get Mr. Cliff in the call. Thank you so much for joining me in this lovely session. I will see you very soon within the next 15 days in the big webinar where we all get onboarded in ADUP. Thank you so much, ladies and gentlemen. We are one. We are Mitha. Thanks for the important updates on ADUP. I'm 100% sure that this will add up a lot of money in our bank accounts. Thank you very much. Great. Thank you. Thank you. My dear friend, ये बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन डेनिस सर ने हमको दी एडअप के बारे में. और जो नेक्स्ट हमारे स्पीकर हैं वो हम सब जानते हैं उनको. He's a great speaker. He's a great gentleman. The one managing our Kilios Academy from the back end, training us on all the different aspects of trading. So next speaker is, we need to invite him. So I can just request our host to make him a co-host. I can see Mr. Cliff over here. So Mr. Cliff is a co-host now. So Mr. Cliff, we are waiting to hear from you. You can actually unmute yourself. So we are here to welcome you on this Zoom call so that you can share your part of the updates
welcome to the Zoom call, sir. Thank you so much. Can you hear me loud and clear? Yes, sir, loud and clear. We can see you as well. Thank you. Thank you. I really appreciate it. So much beautiful love and beautiful community and family right here. If you can hear me, can we? Okay, thumbs up. Good. First of all, I just want to say thank you for each and every single person that is on this stream right now. The love, the commitment as a leader, as an individual who believes in this vision. I'm super happy and grateful for you that you are part of a revolution that is happening. In order for me not to take too much time, I'm going to go straight into what I have for you all today. I'm going to try as much as possible to basically just deliver as simple as I can so that every single thing will make sense to you all. I am here to talk about our educational academy and what we are doing in the financial market. Now, in order for you to be able to understand what we are doing, you need to be able to understand what is happening in the industry. So first things first, the first thing, can you guys see my screen? Yes, Cliff, we can very well see your screen. Okay, perfect. 1 second. Give me a second. Let me bring it up here so that I can see it myself. Okay, perfect. Got it. Okay, now. So I'm going to share it again. If you guys can see it, just let me know. Yes, Cliff, It's clear now? Yes, it's visible. Perfect. Thank you so much. So the first thing that I just really want to talk about today is really about the problem. Before I let you all know about the solution that we have, I want you all to understand the problem in this industry that we are in right now. It is not new. The financial markets is not new. I am pretty much sure each and every single person that has been in this space for a while, when we talk about the financial markets, you understand exactly what it means. And so what we are doing as a community, what we are doing as a company, is to be able to redefine trading education. Now, the first thing that I want you all to understand is the problem. You see, the trading education industry is flooded with unstructured contents, unverified educators, and zero accountability. And this conversation is not new to some of you. I'm pretty much sure the first day you heard about how do I get involved in the financial market, you got confused. Like the more you wanted to stop being confused, so you did research. But the more you did a research, the more confused you became. And so people will ask themselves, where do I start from? Why do I even need to watch this, or why do I not need to watch this? And so one of the things that we are trying to do, or one of the things that we have done repeatedly, is to be able to help people to find that structured line upon line, precept upon precept, a holistic structure of an information. So students will finish information, but they will have no skill. They will have no career path or no way to even verify what they have learned to put them into practice. So we did two things. And the two things that we have done is why I'm super excited for each and every single person on this call or anyone who is part of this vision. So the two things that we have done is that we have combined two solutions into one. So watch this. When we started the conversation, I told you that the problem that is in this industry is, number one, either people don't know how to learn, or number two, people don't even know how to be able to earn also from this industry. So number one, if you want to learn, you don't know how to start. You don't know where to start. If you want to earn, I'm talking about if you want to be an investor in the financial market, you also don't know where to start from. So what we have done is that we have combined two ecosystems together in our department to be able to create this solution. So we're going to be talking more about this, especially to take you guys into a proper webinar.
for you to understand every single new update we have, especially for the educational part. We will take you guys through the proper webinar will be announced soon to the whole community, and we'll take you guys through that. But what I'm here to do is to give you a teaser, okay? So many of you know that we have an educational platform, and we also have a portfolio management platform. Now, I want to talk about the portfolio management platform because the educational platform is self-explanatory, especially when we do take you guys through the onboarding of how to understand where to learn from and so on and so forth. You will get it. But let me talk a little bit about the portfolio management part of our ecosystem in our department. You see, entering into this year, it is not a joke about what is going on in the world. We can talk about it today and we may finish it next year. But that is not the point, because this is not the first time that the world has witnessed situations like this. It happens all the time. Now, I mean, many people don't know this, but at the end of the day, in every single seasonal catastrophe, you will say, in this industry, right after that, it's a beautiful journey of another bull run. It happens all the time. But how does successful firms survive? What did we do and what are we doing that created that survival structure for our department? That is what I'm going to tell you what we are doing, and so that you can be able to understand exactly how we are redefining things in our department. So when we entered this year, in the beginning, some of you guys, I'm sure you saw the whole entire volatility of the market. You saw the whole entire aggressiveness of certain assets. Now, when people are, sorry for me to use these words, ignorant about the financial market, the problem is that they think everything that moves in the financial market is meant to be caught or is meant to be benefited from. But it doesn't work like that. You see, management, when it comes to portfolio, it's not about offense, it's about defense. I used to say this all the time, that a stop loss is a stopped trade, not a lost trade. You see, in the investment space, in the financial market, in the trading space, many people play more offense. And so the day that they don't get what they want, they lose more. But trading or in the financial markets is like being in the boxing ring. The truth of the matter is, when you are in the boxing ring, no matter what you do, you are going to get some punches. Is that true? You will get some punches on your face, beside your body, in different locations. You will get punches. But the goal, your goal as the person in that ring, is to make sure you don't get knocked out. This is the same formula that we use in our department. This is the same formula that you will see in every portfolio firm, that the goal is to make sure you don't get knocked out. The goal is to make sure you can leave to trade another day. And that is exactly what we did. And so what we did was, in the beginning of this year, we realized, look, the volatility of the market and the things that is happening is not favorable for us to be able to keep on trying to generate a lot of trades from the market. So what did we do? Did we stop trading completely? Not necessarily. I mean, some of you guys have still been able to witness the activities going on in the verified groups that you are in, and I'm sure you can see it. We didn't stop trading completely, but what we did is we reduced the number of trades that is meant to be taken. And that is all that we did. So what we did was to reduce the number of trades we're taking, not necessarily that we are looking for quality, but mostly management in terms of risk. Because in trading or in any portfolio firm, we have 3 levels of management. We have U management, we have capital management, and we have risk management. In this context, we were focusing more on the capital and then the U management, the people behind the management. Does that make sense? And so what we did was we were able to really mitigate the whole entire season. And I can assure you, many people who couldn't see this coming, many people who couldn't accept the season we were in, took more hit than you can ever imagine. But here in our team, what we did,
was to play more defense in that season than more offense. And top of it all, what else did we plan to do? We decided to also diversify our assets. And so, as you can tell, we have 3 levels of departments in our ecosystem when it comes to the trading firm. We have what we call Chrysos, which is focusing on the currency assets. And then we have what we call Morpheus, which focuses on the indices asset. And we have what we call Gems, which focuses on the commodities asset. Now, if you know this, we have 2 different types of commodities. We have hard commodities and we have soft commodities. Initially in Gems, we were mostly focusing on the hard commodities. But currently, right now, as I'm talking to you, we have also been back testing also on the soft commodities, because a smart firm in the portfolio management space is a one that diversify. Does that make sense? And so that is what we also did. Now, there are so many updates I wish I could actually really tell you guys right now. But one of the things that I'm super excited about, it's not even the systems of how to be able to find the assets. It's also the systems that we have also created right now that keeps on helping us to recruit people in the trading space that are highly amazing good traders that can always consistently help us to be able to diversify more and more. And so the reality of the season that we are in is that, yes, it is true that the current situation in this industry that we are in right now in the financial market is really crazy. But the firm that is always, the department that is always able to admit that this is the current situation and is able to play the game is the one that always survives. And I can tell you for sure, as transparent as we have always been and as transparent as you have always seen, the reality is that there is more that you guys are going to see, especially when we take you guys through the main webinar that we are going to be having soon, to take you guys through exactly what it is that we have built to take things to the next level. And so with that all being said, one of the things that I want to leave with you all, the one single thought is, you know, I've been in this industry, by the way, this year will be my 14-year plus in this industry. And 14 years in this industry, I can assure you there is nothing I have not seen. And the truth of the matter is, in this season that we are in, many people think it's different from what has happened before. It is not true. Just that this season, we are all witnessing it in many directions. But one thing I can tell you for sure is this: as an investor, as an individual who is in the financial market, every single time situations are happening like this, I can assure you, real investors do not panic. Real investors do not shake. Real investors get excited, because the only way possible for a bull run to happen is for the majority to think the race is over. And I can assure you, this is just the beginning of exactly how many people, I can assure you, those who are able to see the limelight of the kind of the bull run that is about to happen in this industry, those people that will be able to see the vision, they will earn money like never before. I'm not telling you something that is new. This has been a track record. So I'm super excited for us all in this category, for us all in this space to be able to win together. And I can't wait for us to be able to take you guys through what we have for you when we actually have a webinar that we can spend a lot of time showing you guys all about this. I wish I could have shown you guys some of our results so far in some of our back office. But at the end of the day, when we have our webinar in the next couple of few weeks ahead, I will assure you that you guys are going to get excited with exactly how we have diversified things. So I don't want to take too much of your time, but one thing I can say right now is that don't forget what I told you the last part, that in every investment space, in every financial market season, when things are like this, it means the next phase is going to be incredible. And I'm happy that you are here to witness this as well. So with that all being said, I'm going to pass the call back to our host, and then I will see you guys on our future webinar. Thank you. Thank you very much, Cliff. Thank you very much for that informative presentation. And seriously, you have narrowed down on the 2 most important challenges in this field. And I personally believe that the way you are managing the portfolio and the other things in the back end is simply astonishing. And we will be looking forward to our main Zoom call with all the updates, and we will be very excited to see the live results and everything that you shared with us.
and we truly believe in your capacity and the way you are managing our portfolio and delivering the results even in this turbulence time. So we are lucky to have you with us, and we are very blessed that you are a part of our team. So thank you very much for your great presentation. So my dear friend, this was Mr. Cliff Chicona. हमें बता रहे थे कि किस तरीके से जो दो मेन प्रॉब्लम्स हैं इस इंडस्ट्री के अंदर वो मैनेज की जा रही हैं, और इवन इन दिस टाइप ऑफ ट्रबल टाइम्स जब वॉर चल रही है, कितने बेहतर ढंग से फंडामेंटल्स को मैनेज करते हुए चीजों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और वेरी सून इन कपल ऑफ फ्यू डेज और वीक्स हमारे साथ एक और इलेबोरेटेड जूम कॉल होगी जहां पर हम आपको बहुत डिटेल में स्ट्रेटेजीज और हमारे फंडामेंटल्स के बारे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो मुझे पता है आप भी मेरी तरह एक्साइटेड होंगे उस पर्टिकुलर कॉल के लिए। तो अब वक्त आ गया कि अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करें, a very charismatic personality, someone who always inspires us with his words and actions. And it's time to invite our beloved Vikas sir over the stage. Vikas sir, if you are here, so you can please. So, your co-host, sir, you can please take on the stage. We invite you with our great gesture. We can Thank actually you show. so much. बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग जी आपके टाइम का। एंड आई थिंक आज जो कम्युनिटी मैं देख रहा हूँ यही कम्युनिटी है जिसकी स्ट्रेंथ की बदौलत आज कंपनी यहाँ पे पहुँच चुकी है। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच एवरी सिंगल स्पीकर जो अभी गए। दो मेजर स्पीकर थे, दो की पर्सन थे हमारी कंपनी के जिन्होंने आज अपनी दिन रात मेहनत की बदौलत कंपनी को इस लेवल पे लेके आए हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। वंस अगेन मिस्टर क्लिफ एंड मिस्टर डेनिस, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम फॉर आवर कम्युनिटी बिकॉज दिस वाज रियली इम्पोर्टेंट स्पेशली एट दिस टाइम। तो मैं अपनी कन्वर्सेशन को शुरू करूँगा। थोड़ा सा मैं सम अप करना चाहूँगा मिस्टर डेनिस सीहू की, क्योंकि आज की जो कॉल है वो बहुत ही ज़रूरी थी उन चीज़ों को जो हम पिछले 6 साल से कहते आ रहे हैं। हम पिछले 6 साल से एज अ कंपनी दो चीज़ों पे फोकस करते आ रहे हैं। नंबर वन, हम डिजिटल एरा में जी रहे हैं। हमें अपने जो डे टू डे रूटीन है, जो अपना वर्किंग लाइफस्टाइल है, उसको डिजिटल फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा और हम डिजिटल प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, हम डिजिटल और फाइनेंशियल मार्केट की एजुकेशन को प्रमोट कर रहे थे। और पिछले 6 साल से एज अ कंपनी हमने बहुत अनथक मेहनत की है और आज बड़ा प्राउडली हम यहाँ पे बैठ के कह सकते हैं कि आज वो टाइम आ गया है जहाँ पे कंपनी ने अपनी सारी वेरिफिकेशंस को पूरा कर दिया है। आज अगर हम ग्लोबली मार्केट को देखें तो मार्केट में क्या चल रहा है? स्कूल्स शट डाउन हो रहे हैं, स्मार्ट लॉकडाउन्स अनाउंस की जा रही हैं, गवर्नमेंट के पास कोई वे नहीं है चीज़ों को मैनेज करने का, बिजनेसेस इम्पैक्ट आ रहा है। ऐसी सूरत में सबसे जो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में कही जाती थी रियल स्टेट की, उसमें कोई लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो ऐसे में क्या बचता है? ऐसे में फाइनेंशियल मार्केट ही हैं जो कंपनीज को या लोगों को पैसा बना के दे रही हैं। रिसेंटली गोल्ड में लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है। क्रिप्टो करेंसी में ठीक है, फॉर नाउ अभी तक रेगुलेशंस की वजह से कुछ चीज़ें पोस्टपोन हुई हुई हैं, लेकिन ये चीज़ें पोस्टपोन होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि ये चीज़ें ऊपर की तरफ नहीं जाएंगी या आगे नहीं बढ़ेंगी। इन चीज़ों को आप मार्केट में बढ़ता ही देखेंगे। उसकी रीज़न ये है कि अब बहुत से लोगों को एजुकेशन मिल रही है, बहुत से लोग जो हैं वो सक्सेसफुली अंडरस्टैंड कर रहे हैं इन फाइनेंशियल मार्केट्स को। तो अभी मिस्टर डेनिस सीहू के टॉपिक को मैं दोबारा से टच करूंगा। नंबर वन, आजकल अगर मैं आपकी बात करूं, आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, तो आप फ्री चीज़ों को टेस्ट ज़रूर करेंगे। तो ये मार्केटिंग का वे है। आजकल कंपनीज जो परफ्यूम कंपनीज हैं वो आपको टेस्टर देती हैं, चेक करें, ट्राई करें, अगर आप लाइक करेंगे तब आप इसको यूज़ करें। और बहुत से लोग आजकल, पहले क्या करते थे, परफ्यूम का टेस्टर लेके वहीं पे बाय कर लेते थे, लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी। अब क्या हो गया है, लोग क्या करते हैं, वो परफ्यूम का टेस्टर लेते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं, घूमते हैं, 2 घंटे 3 घंटे बाद वापस आते हैं या फिर अगले दिन वापस आते हैं, फिर वो बाय करते हैं कि हाँ ये लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम थी, हाँ ये चीज़ ठीक थी। तो हर दौर में जो मार्केटिंग का स्टाइल है वो चेंज होता रहा है।
अगर हम बात करें, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, सोशल मीडिया की कंपनीज हैं, ये बिलियन ऑफ डॉलर्स की कंपनीज थी, लेकिन आज उन्हीं कंपनीज के अंदर एक और तबका आ गया है, एक और पार्टी आ गई है जो उनका शेयर खा रही है। और वो कौन है? वो इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मार्केट है, जो बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुकी है। तो कहने की बात यह है कि हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें अपने जो लिविंग स्टाइल है उसको डिजिटल ज़्यादा प्रमोट करना होगा। हम में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी बिहाइंड हैं, अभी भी लोगों को वॉलेट क्रिएट करना नहीं आता, अभी भी लोगों को एजुकेशन नहीं है कि हमने फाइनेंशियल मार्केट में अपने पैसे को टॉप अप कैसे करना है। तो इन्हीं चीज़ों को अगर देखा जाए, अगर मैं सारी चीज़ों को क्यूमुलेटिव आपको सम अप करके बताऊं, तो एडअप क्या है? हम एक फ्री एडवर्टाइजर प्लेटफॉर्म कंपनीज के लिए लेके आ रहे हैं, और हम फ्री में लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप आएं, आप कुछ टास्क क्रिएट करें, आप कुछ टास्क कंप्लीट करें, और उन टास्क की बेस के ऊपर आपको एम कॉइन मिलेंगे। और एम कॉइन अगेन ऑब्वियसली आपको पता है, राइट नाउ दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर एनी क्रिप्टो कि आप उसको भी बाय करके होल्ड करें। जैसे ही बुल रन स्टार्ट होगा, मार्केट में मूवमेंट आएगा, तो आपको 10, 20, 30, 40% किसी भी तरह का आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। मेरे लिए अगेन ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि मैं अगर मार्केट में जाऊं, तो मैं लोगों को अगर फ्री में कोई चीज़ ऑफर कर रहा हूं। हम क्या करते हैं, हम अगर कोई अच्छी मूवी, स्पेशली धुरंधर की अगर बात करें, कितना बिजनेस कर दिया, बहुत बिजनेस किया है, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनी है। क्या है, दे प्रमोटेड इट ऑन अ सच अ लेवल कि जिसने नहीं भी देखनी थी वो जाके देखा है। सारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सारे जो एक्टर्स हैं, उन्होंने उसको बड़े अच्छे से प्रमोट किया है, एंड आई थिंक इट्स ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर। मार्केटिंग जितनी अच्छे तरीके से आप करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। मैं एज अ कंपनी अगर बात करूं, तो फ्री में अगर कंपनी आपको कोई चीज़ दे रही है कि आप जाएं, आप टास्क कंप्लीट करें। अच्छा, उन टास्क पे मिलेगा क्या? उन टास्क पे आपको एजुकेशन मिलेगी। उन टास्क को कंप्लीट करने पे, टास्क हैं कौन से? आप कुछ किसी जगह पे जाके कोई वॉलेट क्रिएट करते हैं, कोई फॉर्म फिल करते हैं, कोई कमेंट करते हैं, और वहां पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या इंफॉर्मेशन मिलनी है? इट्स ऑल अबाउट फाइनेंशियल मार्केट। उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पे जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज होंगी, वो उनके कमेंट पढ़ने से आपको एजुकेशन मिलेगी। तो आज की जो एरा है, इस एरा के अंदर आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ स्क्रॉलिंग ना करें, अपने मोबाइल फोन का सही इस्तेमाल करें। आप में से ही कुछ ऐसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर बन के मिलियंस ऑफ डॉलर्स एवरी सिंगल मंथ यूट्यूब से कमा रहे हैं, टिकटॉक से कमा रहे हैं, इंस्टाग्राम से कमा रहे हैं। और उसके अलावा उनको पीआर अलग से मिलती हैं, उनको रेपुटेशन अलग से मिलती है, और चीज़ें अलग से मिलती हैं। हाँ ठीक है, उन लोगों ने कर लिया, लेकिन कंपनी आपको क्या देने जा रही है? आपको कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर बनने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, आप टास्क कंप्लीट करें, और जो आप टास्क आप कंप्लीट करेंगे उसके अगेंस्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, मजे की बात कब शुरू होती है? मजे की बात तब शुरू होती है जब आपको रेफरल भी मिलेगा। एक तो ये है कि आपने जो टास्क कंप्लीट किया उसके अगेंस्ट आपको कंपनी ने रिवॉर्ड दे दिया, लेकिन आप अगर मुझे रेफर करते हैं, मेरे रेफर करने से अगर मैं उसको डाउनलोड करता हूं, मैं कुछ टास्क कंप्लीट करता हूं, तो कंपनी उसके ऊपर भी आपको रिवॉर्ड देने जा रही है। एंड आई थिंक दिस इज द पावर ऑफ मार्केटिंग। ये एक कम्युनिटी को इतना बूस्ट देगा और इतना रेवेन्यू जनरेट होगा। और लेकिन अगर हम देखें, तो एक छोटा सा पाए होगा मार्केट शेयर में से। जो सोशल मीडिया की इंडस्ट्री है, जो इंटरनेट की इंडस्ट्री है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए जा रहे हैं इस इंडस्ट्री से, उसमें से एक छोटा सा शेयर होगा, लेकिन वो छोटा सा शेयर भी मिलियंस की सूरत में आपको मिलने वाला है। और मैं एक बात आपको यहां पे बताता चलूं कि ये क्यों सक्सेसफुल होगा। ये इसलिए सक्सेसफुल होगा कि फेसबुक एडवर्टाइजमेंट, गूगल एडवर्टाइजमेंट के ऊपर लोग जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, इस पे कोई गारंटीड रिवॉर्ड नहीं आ रहा। आप सिर्फ कंपेन रन करते हैं, कंपेन रन करने के ऊपर आपका पैसा चला जाता है एज अ कंपनी।
उसके ऊपर कोई गारंटी नहीं है कि आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा या कंपनी को कोई रेवेन्यू आएगा। यहां पे क्या है, यहां पे बोथ पार्टीज बैलेंस्ड हैं। कंपनी डिसाइड करती है आप ये टास्क करें, अगर वो आप टास्क पूरा करते हैं आपको वो रिवॉर्ड मिलता जाएगा। एज क्या है, कंपनी का काम पूरा हो गया, आप लोगों को एडवांटेज मिल गया। सो दोनों पार्टीज विनिंग सिचुएशन में हैं। तो मेरे ख्याल में ये ऐप जो है इटसेल्फ इज गोना बी ह्यूज। आने वाले 2 से 3 महीने में आप इसके डाउनलोड बढ़ते देखेंगे, लेकिन इसका मार्केट शेयर बढ़ता हुआ मैं अगले साल फर्स्ट क्वार्टर में देख रहा हूं। एंड आई कैन गारंटी यू कि ये इटसेल्फ मिलियंस ऑफ डॉलर्स रेवेन्यू में जनरेट करके देने वाली है। अब दूसरा टॉपिक टैप ऑन करते हैं, वो है इल्मों का। आपके सामने आज हर बंदा मोस्टली इतना तो जरूर जान ही गया है कि फाइनेंशियल मार्केट एग्जिस्ट करती है। आज से अगर हम 5 या 10 साल पहले वापस चले जाएं और वहाँ के डिस्कशन करें, तो मुझे नहीं लगता था कि 100 में से 90 लोगों को भी फाइनेंशियल मार्केट का पता था। आज कहीं भी बैठें, चाहे वो 9 to 5 जॉब में हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, हर बंदा फाइनेंशियल मार्केट में अपना पैसा डाल रहा है। सेम लाइक आज से जो 30-40 साल पहले एक ट्रेंड बना था कि आप रियल स्टेट में पैसा डालें तो आपका पैसा बनेगा। अच्छा जी, लोग अक्सर ये चीज़ कहते हैं कि वो जी मेरा लॉस हो गया। अच्छा, कई ऐसे लोग रियल स्टेट में भी थे जिनके पास एजुकेशन नहीं थी, जिनको पता नहीं था, उन्होंने रियल स्टेट में पैसा डाला, राइट लोकेशन नहीं थी, राइट इन्वायरमेंट नहीं था, राइट प्रोजेक्ट नहीं था, तो क्या हुआ, फेल हो गए, प्रोजेक्ट फेल हो गया, लोग फेल हो गए, उनकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। इसी तरह से मैं अगेन ये बोलूंगा, हम पिछले 6 साल से एक ही बात बार बार बोल रहे हैं कि प्लीज खुदारा आप थोड़ी बहुत फाइनेंशियल एजुकेशन लें, अपने आप को एजुकेट करें। और उसी के लिए हम ये जो इल्मो एकेडमी है ये हम अपनी बना रहे हैं। हम इसको स्पेशली सबसे पहले मिस्टर क्लिफ एक कोर्स डिजाइन करते हैं, उसका स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, जो ट्रेडर होता है उससे लॉजिक्स पूछते हैं, उससे फंडामेंटल्स पूछते हैं कि भाई आप ये क्यों करना चाह रहे हैं, उनसे डेमोन्स्ट्रेशन लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन लेने के बाद जब वो स्क्रिप्ट अप्रूव्ड होता है तो वो जूम कॉल के ऊपर जाता है, वो रिकॉर्ड होता है, रिकॉर्ड होने के बाद वो अपलोड होता है और वो आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन एक काम जो है वो सिर्फ आप कर सकते हैं, वो ना कंपनी कर सकती है ना कोई और कर सकता है, वो आपको ही करना पड़ेगा। आपने उसको कोर्स की वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखना है, बार बार देखना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, तब जाके चीजें आपके लिए बेहतर होंगी, तब जाके चीजें आपके लिए आसान होंगी। क्यों कि फाइनेंशियल मार्केट इज नॉट ओनली अबाउट स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल मार्केट इज ऑल अबाउट स्ट्रॉन्ग ब्रेन, स्ट्रॉन्ग पावर, और आपका एक बैलेंस्ड जो आपका प्लेटफॉर्म है, आपके ऊपर चेक एंड बैलेंसेस होने चाहिए, आपके ऊपर प्रोसेसेस बने होने चाहिए। तो इसके बगैर आप कभी भी नहीं चल सकते। आपकी रिस्क मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी ने डिफरेंट लैंग्वेजेस में, एक होता है चलें ठीक है जी इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स जो है वो अपलोड कर दिया, कंपनी ने मल्टीलिंगुअल कोर्सेज आपके लिए अपडेट किए हैं। आप लोगों को डेली सिग्नल मिल रहे हैं, उन सिग्नल का सक्सेस रेशियो आपके सामने है कि कंपनी कितने स्ट्रांगली आपको सिग्नल भेज रही है और उन सिग्नल्स के अगेंस्ट कितनी पिप्स जनरेट हो रही हैं। तो मेरा आप लोगों को एक ही कहना है, स्पेशली कुछ लोग ऐसे मेरे भाई होंगे जो अभी इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की सिचुएशन में नहीं होंगे, क्योंकि उनकी अपनी पर्सनल कमिटमेंट्स बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, डे टू डे लाइफ में बिजी हैं। अपने बच्चों को खुदारा इस एजुकेशन का हिस्सा बनाएं। आपको कंपनी एक्सेस दे रही है, आपको कंपनी ईमेल्स के थ्रू प्लेटफॉर्म पे एक्सेस देगी, जहाँ पे आप जाके सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं ये मैंडेटरी बोलूँगा हर पेरेंट को कि कोशिश करें आप अपने बच्चे के साथ बैठ के, सामने बैठ के
उसको डेली 1 वेबिनार, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, 1 वेबिनार आपने अपने बच्चे को डेली शुरू करवाना है। मैं गारंटी से कहता हूं, अगर आप अपने बच्चे को 1 महीना, ज्यादा नहीं, 1 महीना आप ये वेबिनार दिखा देंगे, तो एटलीस्ट आपके बच्चे को ये एजुकेशन जरूर आ जाएगी कि आप फाइनेंशियल मार्केट को अंडरस्टैंड कैसे करते हैं, फाइनेंशियल मार्केट में पैसा टॉपअप कैसे करना है, अच्छा ब्रोकर कैसे चूज करना है, ब्रोकर होता क्या है, रेगुलेशंस क्या हैं, पिप्स क्या हैं, आप कितनी लॉट उठा सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, ट्रेडें एटलीस्ट ले सकते हैं, ट्रेडें ओपन कर सकते हैं, लेकिन अगेन रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, इसके लिए आपको कम से कम 6 से 8 महीने और अपने बच्चे को देने पड़ेंगे। ये इसी तरह से है जैसे आप कोई डिग्री लेने जाते हैं, आप सुबह उठते हैं, एफर्ट करते हैं, अपने बच्चों को रेडी करते हैं, रेडी करके आप उनको स्कूल भेजते हैं, स्कूल भेज के आप मेक श्योर करते हैं कि वो अच्छी जॉब लें। 8 से लेके 9 घंटे बच्चे स्कूल में रहते हैं, पिक एंड ड्रॉप का टाइम ऐड करें तो उनकी उनकी जो लाइफ है वो बड़ी ही डिफिकल्ट हुई हुई है। लेकिन अभी रिसेंट मार्केट में जो चल रहा है, मोस्टली स्कूल्स यूरोप के अंदर 4 डेज अनाउंस कर चुके हैं, एंड वेरी सून, अगले 1 से 2 साल में आप ये देखेंगे, मेरी इस बात को रिकॉर्ड कर लें कि स्कूल्स बंद हो जाएंगे, लोग घरों से एजुकेशन लेंगे, ऑनलाइन एजुकेशन लेंगे। और यही बात हम पिछले 3 साल से करते आ रहे हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन और कुछ सीख लें जो आपके बच्चों को मुस्तकबिल बेहतर करने में हेल्प करेगा। तो हमारी कंपनी इन प्रोडक्ट्स के ऊपर इस तरह से फोकस कर रही है कि ये मार्केट शेयर अपना अपना ट्रिलियन डॉलर्स का लेके बैठे हैं। अगर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करें तो ये भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्री है, जिसमें ऑब्वियसली हम मार्केटिंग का एक छोटा सा शेयर लेने जा रहे हैं। अगर हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करें तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री है, जिसमें हम एक छोटा सा शेयर अपना लेने जा रहे हैं। इससे कोई फाइनेंशियल सेक्टर पे इम्पैक्ट नहीं आता। इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, इट्स ऑल अबाउट गुड टीम, इट्स ऑल अबाउट रिस्क मैनेजमेंट, जो कि हम क्रिएट कर चुके हैं। प्रूवन सिस्टम है। वेरिफिकेशन किधर है? वेरिफिकेशन आप सिग्नल्स से देख सकते हैं। वेरिफिकेशन, जितने बंदे सिग्नल्स को कॉपी या सिग्नल्स को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि कंपनी डेली बेसिस पे कितने पिप्स बना रही है, और उन पिप्स के अगेंस्ट आपको पता है एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट जनरेट होती है। एंड दैट इज द रीजन वी एनकरेजिंग एवरीवन बी पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। आप इनको समझें, आप इनको अंडरस्टैंड करें और इनसे पैसा बनाएं। इन्हीं से पैसा बनने वाला है। अच्छा, अब एक थर्ड सेक्टर है जिसको मैं अगेन डिस्कस करना चाहूंगा, जो थोड़ा सा अभी स्लो डाउन हो चुका है, लेकिन वही बात है जो 6 साल पहले हम इन सेक्टर्स की बात कर रहे थे, कंपनी पिछले 2 साल से उसके ऊपर काम कर रही है, और वो टॉपिक है मेटावर्स का, वो टॉपिक है M20 वर्स का, जो कि बहुत ही बड़ा बनने जा रहा है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, मार्केट के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक अफरा तफरी है, लोग पैनिक हुए हुए हैं। तो इन सारी पैनिक सिचुएशंस में, स्मार्ट लॉकडाउन्स की सूरत में, आपको पता है एक ही इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, और वो इंडस्ट्री कौन सी है? वो मेटावर्स की है। मेटावर्स शुरू कब हुआ? कोविड के बाद एक नई एरा शुरू हुई। कोविड के दौरान उन्होंने वर्कआउट किया कि कौन सा ऐसा सेक्टर है जिसमें पैसा बन सकता है, और उसकी बेस पे फेसबुक जैसी कंपनी ने अपने नाम को स्विच कर लिया, अपने नाम को मेटा कर लिया। तो ऑब्वियसली उनको एक बहुत बड़ा रेवेन्यू समझ आ रहा था कि अभी मार्केट में ये चीज़ें आने वाली हैं, अपकमिंग ईयर्स में ये चीज़ें आने वाली हैं। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग शुरू की। अगेन वी आर ब्लेस्ड कि हमारी कंपनी पिछले 2 साल से इसके ऊपर काम कर रही है, और अगले आने वाले चंद दिनों में आप देखेंगे कि हमारे फेज 3 की डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। उसमें क्या क्या आने वाला है मैं क्विक सम अप आपको दे देता हूं। ज्यादा डिटेल्स में जाएंगे तो कॉल बहुत लंबी हो जाएगी। तो क्विक सम अप ये है कि सबसे पहले तो फेज 2 के कुछ एसेट ड्रॉप्स और रहते हैं, जो कंपनी अगले 2 से 3 दिन में मार्केट में लाइव कर देगी। जो हमारा मार्केट प्लेस है वहां पे आपको लाइव मिलेगा। नंबर 1,
नंबर टू, कंपनी अब आपको अपॉर्चुनिटी देगी वेरी सून कि आप बैक ऑफिस के थ्रू आप लैंड एक्वायर कर सकें, लैंड की सेलिंग दोबारा से ओपन होगी और बैक ऑफिस के थ्रू ही आप उसको परचेज कर सकेंगे। ये अगेन एक बहुत सुनहरी मौका है। गिवन सर्कमस्टांसेस आप खुद देख लें, अगर कंट्रीज जंग की या जिस तरह की भी सिचुएशन बनी हुई है, आगे कोविड आया, कोविड में लॉकडाउन चली, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू हुआ, वो कल्चर खत्म नहीं हुआ, वो चीजें खत्म नहीं हुई। आज भी लोग वन डे वर्क फ्रॉम, मोस्टली जो प्लेसेस हैं जो आप कह लें ब्लू चिप कंपनीज हैं, वो मोस्टली वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। वीक में एक आधा दिन है जब वो बुला लेते हैं कि आप आएं और आके बैठ के काम करें, बाकी उनको जरूरत नहीं है। इट्स अ लॉट, ये कॉस्ट सेविंग है। यही चीज आगे रेप्लिकेट होने वाली है आपकी इकोनॉमी के अंदर। आपके सारे बिजनेसेस जो मॉडल हैं ये सारे ऑनलाइन कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन ऑनलाइन 2D में नहीं 3D में जाएंगे, और 3D में भी ये मेटावर्स के अंदर जाएंगे। क्योंकि लोग अब इतने एजुकेट हो चुके हैं कि अगर 3D में कोई एक शर्ट मूव हो रही है तो उनको वो चीज़ नहीं चाहिए है। लोग एडवांस हो चुके हैं, लोग अपना एवाटार बना के उसके ऊपर वो शर्ट पहन के 360 व्यू करके देखेंगे, फिर सिलेक्ट करेंगे, फिर परचेज करेंगे। तो ये कौन देने जा रहा है? ये M20 ग्रुप ऑफ कंपनीज देने जा रहा है, ये मीथर देने जा रहा है। मीथर ने हमेशा उन प्रोडक्ट्स पे काम किया है जो आने वाले समय में बिलियंस ऑफ डॉलर की इंडस्ट्री बनने जा रही हैं। एंड अगेन मैं शुक्रगुजार हूं मिस्टर सीहू का, जिनका इतना बड़ा विजन है। और ये विजन, मैंने एक दफा उनके साथ बैठा, मैंने उनसे पूछा कि सर आप चीज़ों को किस तरह से आगे लेके बढ़ते हैं, ये आइडियाज़ किस तरह से आते हैं? तो उन्होंने कहा, वकास व्हाई डू यू थिंक कि हम कोई भी, ये जो मार्केट में समिट हो रहा है, ब्लॉकचेन का है, फाइनेंशियल सेक्टर का है, एआई का है, हम क्यों मिस नहीं करते? हम सुबह उठते हैं, उन समिट्स में जाते हैं, सारा सारा दिन हम लोगों से मिलते हैं, रिलेशन बिल्डिंग करते हैं, आइडियाज शेयर करते हैं। तो ये पार्ट ऑफ प्रोसेस है। आपको एजुकेशन मिलती ही तब है जब आप सुबह उठ के जाते हैं, जब आप मार्केट में लोगों से मिलते हैं। तो अगेन हम ब्लेस्ड हैं, हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है। और इस वक्त, इस समय में अगर आप बात करें, हर तरफ पैनिक सिचुएशन है। दुबई ऑब्वियसली वाज अ हेवन राइट नाउ। दुबई की मार्केट ने लोगों को बहुत पैसा दिया था रियल एस्टेट के अंदर। राइट नाउ इट्स अप एंड डाउन। लेकिन अगेन हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि जब जब चीजें अनसर्टन होती हैं, तब तब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है आपके लिए पैसा बनाने की। अगेन मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि आपके मेंटरशिप अगर अच्छी है मार्केट के अंदर, आप कभी भी मार नहीं खाएंगे। क्यों? वो मेंटर आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करवाता रहेगा। और यही चीज आई थिंक हमारे मिस्टर सीहू कर रहे हैं। एंड अगेन सारी चीजें एक पैनल पे डिस्कस होती हैं, सारी चीजें मैं डिस्कस यहाँ पे नहीं कर सकता। अपकमिंग ईयर्स में जो ग्रोथ मैं कंपनी की देख रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि आप अभी वो देख पाएंगे। उसकी रीजन ये है कि आज से 4 साल पहले जो ग्रोथ मैंने कंपनी की देखी थी, उससे हमने 200 टाइम ज्यादा किया है। और अब जो एरा मूव होने वाली है, ये बहुत फास्ट होगी। अगर मैं बात करूं 2010 से लेके 2020 तक, ये एक स्लो पेस ग्रोथ थी, ये इतनी फास्ट नहीं थी जितनी अब 2020 से लेके 2030 तक होनी है। एंड आई थिंक 2026 आ गया हुआ है, और 2026 में ये आप कह लेंगे फाइनल राउंड चल रहा है। अब इस फाइनल राउंड में बहुत तेजी से आप चीजों को अडॉप्ट होते देखेंगे। बहुत सी ऐसी चीजें आ रही हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है। ऐसी ऐसी गाड़ियां मार्केट में अंदर आ गई हैं जिन्होंने आते ही बड़ी बड़ी कंपनीज को उनके रेवेन्यू को डाउन कर दिया है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी मार्केट है, इसमें इन्फ्लुएंसर्स चीज़ों से पैसा बना रहे हैं। कंपनीज जो थी ये रन हो रही थी, जो कंपेन्स हैं उनसे पैसा बन रहा था। अब हम जो मॉडल लेके आए हैं एडअप, हम विन विन सिचुएशन लेके आए हैं लोगों के लिए। एंड आई कैन अश्योर यू कि इस मॉडल के जरिए बहुत जल्द ये कंपनी बिलियन डॉलर कंपनी बनने जा रही है। आप लोगों को क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा डाउनलोड्स करवाने हैं, रेफर करना है,
एंड अगेन इट्स फ्री। फ्री में कोई भी चीज़ अगर मिले और वो नुकसान ना दे, ये बहुत ज़रूरी है, वो नुकसान ना दे, फ़ायदा दे, तो मेरे ख्याल में कोई भी बंदा आपको ना नहीं करेगा। और अगेन इसकी मेरे लिए बड़ी ही ब्यूटीफुल चीज़ है कि इसमें रिवॉर्ड क्या मिल रहा है। इसमें रिवॉर्ड आपको एम कॉइन मिल रहा है, जिसकी वैल्यू अगेन 10, 20, 30, 40% मार्केट की सिचुएशन के अकॉर्डिंग जा सकती है, बढ़ सकती है। क्यों बढ़ेगी? अगेन आपके सामने आज जो डेवलपमेंट कंपनी ने अनाउंस की है, कंपनी अपनी डेवलपमेंट नहीं रोक रही है। मेटावर्स की डेवलपमेंट एक पूरी मैं कॉल रखूंगा, जैसे डनीश सर ने कहा कि एडअप को लेके एक पूरी ट्रेनिंग कॉल रहेगी जो अराउंड 45 मिनट्स की होगी, जिसमें ये आपको पूरी दिखाएंगे कि किस किस तरीके से टास्क कंप्लीट करने हैं और उन टास्क के अगेंस्ट कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। इसी तरह से जब हमने फेज 2 लॉन्च किया था, और फेज 2 लॉन्च करने के बाद मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसमें आप अपनी जो लैंड परचेज की थी उस पर जाके चीज़ों को बिल्ड कर सकते थे, वही चीज़ फेज 3 में भी होगी। मैं वेरी सुन आपको पूरी डिटेल दूंगा कि क्या क्या चीज़ें अभी आने वाले समय में आप अपनी मेटावर्स में कर सकेंगे। और मेरे लिए अगेन ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? मैं जो देख रहा हूँ आने वाला समय M20 वर्स का है। हम अलाइंड हैं, हमारे पास कम्युनिटी है, हमारे पास बहुत सी जो बड़ी फर्म्स हैं उनके साथ ऑलरेडी डिस्कशन हो चुकी हुई है। बहुत जल्द आप बहुत बड़े बड़े स्टोर्स देखेंगे और ये आने वाले वक्त में अगेन बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट बनेगा। और जब ये बनेगा तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा? जो अर्ली अडॉप्टर्स होंगे। तो अभी जैसे ही लैंड की ऑफरिंग खुलेगी, ये लैंड की ऑफरिंग के साथ कंपनी अगेन आपको ऑफर्स देगी जिसमें आपको कुछ मार्केट प्लेस से एसेट फ्री में मिलेंगे, वो अर्ली अडॉप्टर्स के लिए होंगे। अगेन याद रखिए ये कुछ ही दिनों के लिए खुलेगी, क्योंकि कंपनी के पास ज़्यादा लैंड्स नहीं हैं। तो आप लोग अपने आप को रेडी करके रखें, आप लोग अवेलेबल रहें। जैसे ही अनाउंसमेंट आए अपने लिए एक एक एटलीस्ट प्लॉट जो है वो आप अलॉट ज़रूर करवाइए। क्यों? आने वाले समय में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। और आप इस बात से एग्री करेंगे कि वाकई ही में अगर ये लॉकडाउन का सिलसिला चलता है, गवर्नमेंट स्कूल सिस्टम को कन्वर्ट करने जा रही हैं ऑनलाइन एजुकेशन पोर्टल्स की तरफ, तो सारा ये जो आपकी शॉपिंग है या आपकी सारी चीज़ें हैं, ऑफिस वर्क है या कॉन्सर्ट्स हैं, कुछ भी है, ये सारे का सारा पैटर्न शिफ्ट हो जाएगा इस इंडस्ट्री के अंदर। एंड अगेन वी आर देयर। हमने 2 साल से अपनी तैयारी को शुरू किया हुआ है और हम अगले ये जो इस साल का जो आप देखेंगे पहला क्वार्टर गुजर चुका है, हमने बड़ी तेज़ी से फेज 3 की डेवलपमेंट को कंप्लीट किया है। मेरे पास इतनी ज़्यादा मुझे अलाउड नहीं किया गया कि मैं इंफॉर्मेशन शेयर करूं, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकता हूं कि आने वाले 2 क्वार्टर में आप ये देखेंगे कि आपका फेज 3 भी कंप्लीट हो चुका होगा। और जब फेज 3 कंप्लीट हो चुका होगा तो उस फेज 3 के अंदर आप ऑलरेडी बड़े स्टोर्स को ऑपरेशनल देखेंगे, विच मीन्स कि वो स्टोर्स हमारी M20 वर्स से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लोगों को पे कर रहे हैं जिनके स्टॉक, जिनकी लैंड है, जिनके प्लॉट्स हैं। तो आपके लिए एक अगेन बिग अपॉर्चुनिटी है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और अगेन रेडी रहिएगा, आने वाले 15 दिनों में हम दोबारा एक कॉल रखेंगे एडअप को लेके। क्यों? एडअप इटसेल्फ इज अ बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट। आप अगर M20 ग्रुप ऑफ कंपनीज को देखें तो हमारा इकोसिस्टम अगर मैं आज डिटेल में प्रेजेंट करने बैठूं तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। और ये अगेन क्रेडिट जाता है हमारी मैनेजमेंट को, स्पेशली मिस्टर सीहू को, कि उन्होंने अपने बिजनेस को हमेशा डाइवर्सिफाई किया है, उन्होंने हमेशा दूरंदेशी से काम लिया है, उन्होंने हमेशा आने वाले समय को देखा है कि आने वाले समय में चीज़ें किस तरीके से बेहतर हो सकती हैं और कैसे हम कंपनी को स्टेबल कंपनी रख सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच। अनुराग जी, इफ़ यू वांट टू ऐड अप समथिंग आप ऐड कर सकते हैं। जाने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप लोगों की बदौलत हैं। अगर कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी चीज़ मार्केट में सक्सेसफुल होती है तो वो उसकी कम्युनिटी की बेस पे होती है। अगर हम किसी पॉलिटिशियन की भी बात कर लें तो वो पॉलिटिशियन अपनी कम्युनिटी के अलावा कभी भी पॉलिटिशियन नहीं बन सकता। आज M20 या मीथर
जिस मुकाम पे है वो आप लोगों की बदौलत है। आप लोग कंपनी पे भरोसा कर रहे हो, कंपनी आपकी बेस पे अपने आप को आगे बढ़ा रही है, एंड इट्स अ हैंड टू हैंड प्रोसेस एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, आप लोग जो जुड़े हो, जो पिछले 2 3 4 5 साल, जो जो मेरा व्यक्ति, जो जो मेरा भाई, चाहे वो कल जुड़ा है, चाहे वो 6 साल पहले जुड़ा है, मैं दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। आपने कंपनी पे बिलीव किया, कंपनी आपको प्राउड फील करवाएगी, आपकी जनरेशन्स के लिए एक अच्छी एसेट छोड़ के जाएगी। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच अनुराग जी। आप अगर चीज़ों को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप कर लें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच विकास सर फॉर इतनी ब्यूटीफुली आपने हमारे को हमारी भाषा में चीजों को एक्सप्लेन करा। जितने भी बाकी सारी चीजें अपनी होती है, जब हिंदी भाषा आती है तो एक अलग ही इमोशंस जो है निकल के आते हैं। तो मेरी तरफ से अच्छा, इसमें इसमें अटक जाता है बंदा, थोड़ा बहुत वो हो जाता है, बट अगेन मजा इसी में है। नहीं सर, आपके अल्फाज बिल्कुल दुरुस्त है और बिल्कुल पकड़ थी आपकी उन चीजों के ऊपर, और बहुत ही खूबसूरती के साथ माशाल्लाह आपने चीजों को रखा। और मेरी तरफ से नथिंग टू एड अप, बिकॉज मीथर ऑलरेडी एड अप को लेके आ चुकी है, तो नथिंग टू एड अप सर। सही गो। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सही वेरी गो। मच। तो माय डियर फ्रेंड, बहुत जल्दी हम दोबारा से एक बार रूबरू होंगे अपनी डिटेल जूम कॉल के साथ, जिसके अंदर आपको ये सारी चीजें लाइव देखने को मिलेगी, जिसको प्रकाश सर ने भी अपनी जुबानी हम सब तक पहुंचाई। तो थैंक यू वेरी मच विकास सर, थैंक यू वेरी मच डेनिस सर, एंड थैंक यू वेरी मच क्लिफ चिकोना जी एंड द अदर मैनेजमेंट पीपल फॉर ऑर्गेनाइजिंग टुडेस कॉल। थैंक यू वेरी मच। हम जल्दी मिलेंगे दोबारा से और आगे की चीजों को और आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आज की कॉल को यहाँ पे मुकम्मल करते, मैं होस्ट साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आज की कॉल को यहाँ पे मुकम्मल कर सकते हैं। थैंक यू। Recording stop.